Hello, it is February the 27th and I am Jagjit welcoming you all to the 36th episode of Weekly Takes from New York. Yes, we have had a gap of 3 weeks. I was on a short trip to India. As I had shared with you all earlier in the 35th episode, I had gone to the Singhu border at Delhi to witness on my own the so-called protesting farmers. We'll talk about it. From Delhi, I went to Bihar, where I had a group discussion with young entrepreneurs working as well as some struggling young folks, and learned about their aspirations and what they expect from the Nitish government whom they had voted to power. We'll share with you their thoughts. I also had the opportunity to speak to migrant laborers from Bihar who work in the farms of Punjab and learned from them a totally different side of the story, which needs to be brought out. We'll share with you. We'll start today's episode with news of USA. After all, what's going on? Executive orders are the norm. Let's find out what all Joe Biden, our 46th president, has been doing in his first so-called honeymoon period. Is America happy? Satisfied? We'll discuss. Then we move over to our segment of some little known but unknown facts about New York City. From there, we talk about news of India and discuss some important news of the present week. And then we'll recap the history of Kashmir, the heaven on earth, and learn facts skipped by our own historians. And last but not the least, we'll talk about the happenings and rumblings within the Congress party and its future in the present circumstances. A big thank you to all of you for liking my program. Each of the episodes have been watched by over 15,000 viewers. Subscription has gone up, but those of you who have not yet done so, please press the subscribe button and also the bell icon to get informed about the next episode at the earliest. And if you like the program, which you all do, then press the like button. After all, it's your program. Let's just do it. Namaste, Sat Sri Akal, Adab, Vanakkam. This is Jagjit bringing you the weekly takes from New York. Today morning, as the mercury reads 8 degrees Celsius and it is raining here since yesterday night. Let's begin. News of USA. President Joe Biden's $1.9 trillion plan to address the human and economic toll of COVID-19 pandemic passed the US House of Representatives early today, Saturday, with the next step Senate consideration. But the question arises, where is this money going? Unfortunately, President Biden and Washington Democrats' latest $1.9 trillion stimulus package focuses more on fulfilling partisan priorities than combating COVID-19. Let's look at it closely. In fact, only 9% of their legislation goes to public health spending, while the 91% addresses political items unrelated to the pandemic. Was it necessary? Think about it, America. So what all does it include? The $12 billion in foreign aid. Why is the so-called American Rescue Plan sending taxpayer dollar overseas to non-Americans? I don't get it. The $200 million for the Institute of Museum and Library Service. I like it, but not now. The $135 million for the National Endowments for the Arts. The $135 million for the National Endowment for the Humanities. The $112 million for an underground rail project in Silicon Valley,
a pet project of House Speaker Nancy Pelosi. And to balance it, the 1.5 million for the Seaway International Bridge, a project pet one of Senate Majority Leader Chuck Schumer. Even the vast majority, 95% of the $130 billion for K-12 schools will not actually help get kids back in the classroom because it will not be spent this year. And amidst all this, we do not see the stimulus checks anywhere near us, which should have been perhaps the first step after President Joe Biden took oath, as it was needed by the American people the utmost. What do you think, America? Let's look at the Rasmussen report to see how President Biden has been performing. Reports for Friday, yesterday, the 26th, shows that 49% of US voters approved of President Biden's job performance and 49% disapprove, which is not a good sign during the 100 days honeymoon period. In a reply to another question, 50% of voters say Biden's China policy is worse than Trump's, after President Joe stirred controversy by saying China has different norms towards human rights. Strange, but true. In answer to another survey question, most voters, 54%, believe the Democrat leader is a puppet of the radical left and not the moderate, nice guy he was portrayed as being during the election campaign. What do you think, America? Share your thoughts, and we'll discuss it in the next episode. On the side, a smaller news, but it is something which we must pay importance to. The US, the world's largest economy, owes India $216 billion in loan as the country's debt grows to a record 29 trillion, the largest of which comes from China and Japan. And it did not grow in a day. Before we blame someone, let's look at the facts. America's national debt was $5.6 trillion in 2000. During the Obama administration, it actually doubled. So try and calculate how much each one of us owes before calling ourselves the richest nation in the world. In another news, the FBI is investigating New York Governor Andrew Cuomo's coronavirus task force over its early handling of nursing home deaths. His administration is also defending itself against accusations that its actions exacerbated the spread of COVID-19 in nursing homes at the onset of the pandemic. Some state lawmakers in his own party are pushing to strip his sweeping emergency powers during the pandemic amid the fallout. Now, moving over to our section of some interesting known but unknown facts about New York City. Did you know that the New York City power outage on July 13th, 2019 brought darkness upon the city that never sleeps? The blackout started from a flawed connection among equipment key pieces at the New York City electrical substation. Moreover, it plunged 72,000 consumers in the dark from 6:47 that evening until shortly after midnight. Did you know that Beatles member John Lennon was shot in the archway of the Dakota in New York City? Mark David Chapman shot the band member on December 8, 1980 in this famous building in New York City. Since 1973, John Lennon had been a resident of the said building until the day of his murder. अब चलें भारत की ओर। पहले कुछ मुख्य समाचार। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के 1.5 साल के भीतर ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। आतंकवाद से जुड़े सारे आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं। घाटी में सक्रिय आतंकियों की संख्या न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। जो बचे हैं उनमें भी ज्यादातर स्थानीय और नए आतंकी हैं। मुठभेड़ के दौरान भी बड़ी संख्या में आतंकी
आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पत्थरबाजी की घटनाओं में भी भारी कमी आई है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार घाटी में फिलहाल सिर्फ 45 ओनली 45 आतंकी ही सक्रिय हैं। इनमें से अधिकांश स्थानीय और नए भर्ती हुए युवा हैं। सुरक्षा एजेंसियां युवाओं के आइकॉन बने पुराने आतंकी सरगनाओं को मार गिराने में सफल रही है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ मुश्किल हो गई है। अब कुछ चर्चा किसान आंदोलन के बारे में। मैंने विस्तार से किसान आंदोलन पर पिछले एपिसोड्स में चर्चा किया है। मैंने यह भी बताया है कि किसान कौन होते हैं, कौन हैं और किस तरह इस नए कानून से पंजाब और हरियाणा के आढ़तियों के कमाई पर रोक लगने के कारण वे इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ चंद आंदोलन जीवी अपनी रोटी किसानों के कंधे पर सेक रहे हैं। पिछले दिनों में बिहार गया था। वहां मेरी बातचीत एक मजदूर से हुई जो पंजाब के खेतों में काम करता है। सुने उससे बातचीत के कुछ अंश। घर कुनवार। हाँ, कुनवार गांव में आपका घर है? हाँ जी। यहीं मधुबनी जिले में? हाँ जी। इससे पहले आप कहाँ काम करते थे? पहले हम काम करते थे पटियाले में किया। पटियाला में किए? वहाँ खेत में भी काम करते थे? हाँ, खेत में भी किया। क्या काम करते थे खेत में? मैं गया फिर गेहूं काटने। अच्छा। गेहूं काट के फिर जीरी लगाने का टाइम हो गया। धान रोपने गया उधर। हाँ, तो क्यों चले आए वहाँ से? फिर 5-6 महीना काम किया, फिर घर पर अपना इधर खेती करना है। अच्छा, ऐसे करके हम। अच्छा, तो वहाँ आपको पैसा कितना मिलता था? पैसा जितना काम किया वही, पहले तो 2-3 हजार रुपया मिल जाता था। किस मने एक मुश्त पैसा मिलता था कि रोज का अलग मिलता था? क्या रोज का नहीं, अलग मिलता था। जैसे महीना भी दिन काम किया तो 3,000 का हो गया। महीना 3,000 का तनख्वाह एक तरह से? हाँ, एक तरह से। अच्छा, तनख्वाह 3,000 का? हाँ। अच्छा, और यहाँ पर अगर आप मजदूरी करते तो कितना मिलता? इधर तो अब मजदूरी पहले तो अपना के जितना था, कितना था? 100 रुपया था, चाहे 50 रुपया था, वही था। तो वहाँ यहाँ भी 3,000 था? 100 रुपया अगर हुआ एक दिन का तो महीने का 3,000 हुआ। हो गया। तो यहाँ भी 3,000 था और वहाँ भी 3,000 है, तो क्या फायदा जा करके? देखिए, इधर जो 150 आता है तो घरेलू में नून मसाला आज नहीं है। किसी का तबीयत खराब है तो वहाँ भी तो यही चीज होता था। अच्छा, क्या वहाँ उधर एक बार जो 2,000 भेजा तो चलो 1,000 चाहे से 500 से काम हो गया, 1,500 बच गया। तो जैसे आपसे हम लिए हैं कर्ज तो उसको 3,000 मिल रहा है ना? हाँ। पैसा तो ज्यादा नहीं मिल रहा है? नहीं, पैसा तो बराबर मिल रहा है। हाँ। तो फायदा क्या हुआ जाने का? सब लोग जा रहे हैं इसलिए आप भी चले गए? हाँ, सब जा रहे हैं। कितने लोग गए हैं यहाँ से काम? आपके जान पहचान में कितने लोग वहाँ हैं? हम लोग जान पहचान हम लोग जाते 15 आदमी 16 आदमी का एक बार जाते। एक बार? हाँ। अच्छा, सबको वही 3-3 हजार? हाँ, सबको मिलता था। अच्छा, तो वहाँ मैंने जो वहाँ पर किसान है जिनका वो जमीन है, वो लोग भी खेत में काम करते थे कि आप ही लोग काम करते थे? हम लोग करते थे। वो लोग नहीं करते थे? वो लोग नहीं करते। तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग मतलब जमीन के मालिक हैं तो वो लोग खाली बाहर से देखे यही होता था ना? अच्छा, तो आप लोग अब हम लोग जैसे आप मालक दिगर है, उन्हें चला गया उसको पास। तो हम लोग को वहीं पर अच्छा, महीना 2 महीना का काम दे दिया तो उधरे लग गया। आपको काम मुक गया तो दूसरा मालक दूसरे के यहाँ चले गए? नहीं, वही जगह है, आप ही लग है। फिर दूसरा मालक बोला ठीक है। हमारा अच्छा, एक चीज बताइए हमको। सुनते हैं कि वहाँ नशा भी बहुत करता है लोग। हाँ, ये तो करता है। कौन लोग करता है? मालिक लोग जिनका जमीन है वो लोग करता है? मालिकों लोग करता है और वही मालिक लोग देता है आप लोगों को भी? आप लोग को भी दे देता है, हम लोग को भी। अच्छा, और उससे नहीं हुआ तो गया अपना हट्टी से खरीद के ठीके से अपन ले आया। वही अच्छा, आप लोग मिलता है, 50 रुपया का मिलता है। सब आप लोगों को भी नशा करने के लिए दिया? हाँ, वो दे देता है। क्यों नशा करने को देता है? काम करेगा ज्यादा? मेहनत किया और अच्छा, ही दूर हो जाएगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, मेहनत किया, थकान मिटाने के लिए आप लोगों को भी नशे का उपयोग कराते थे? अच्छा, यहाँ तो नहीं कोई देता है? नहीं। तो वो भी एक फायदा था पंजाब में? जैसा उधर मेहनत ज्यादा करने पड़ता है पंजाब में। हाँ। इस करके उधर कुछ तो मानना पड़ता है, दवा। अच्छा, आजकल जो वहाँ किसान आंदोलन जो लोग कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? अंदाजा है आपको?
वो कर रहा है, वही जो मालक सब है मालिक लोग कर रहे हैं। कर रहा है। किसान जो आप लोग खेत पर मजदूरी में जो काम करते हैं वो तो कोई नहीं आंदोलन कर रहा है, नहीं, कोई नहीं करता है, तो मालिक लोग कर रहे हैं। सब मालिक। अच्छा, मालिक लोग कोई खेत में तो काम नहीं करता है। नहीं करता है। क्या आपको लगता है कि ये थकान मिटाने के नाम पर मजदूर को शराब पिलाना उचित है? क्या ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स राइट्स नहीं है? क्या ये ड्रग एडिक्शन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और खासकर बिहार की नीतीश सरकार को उचित न्यायिक कदम उठाना चाहिए। यह जरूरी है। बिहार जहां शराबबंदी है, वहां के लोगों को दूसरे शहरों में, राज्यों में शराब पिलाया जा रहा है थकान मिटाने के नाम पर। यह गलत है। I was in Patna for some time, where I had the opportunity to meet some successful entrepreneurs, working engineers, struggling young people. I shared my thoughts with them and tried to learn from them as to what ails Bihar and what they would like Nitish Kumar in his fourth successive term to do. One such malaise which they all pointed out to was the education system, which is bad at the initial level of Anganwadi itself. They praised the efforts of Nitish Kumar government in empowering the young school-going children in terms of cycles and in terms of credit cards to students, but lamented the way the teachers' duffers for Anganwadis were being recruited with the money exchanging hands. I am planning something in this regard, which I'll share with you all very soon and seek your help and support also in rectifying this system. To raise our voice against this malaise, it is necessary that we take lead. अब चले धरती के स्वर्ग कश्मीर की ओर. As I had told you earlier that we will recap in the next episode about whatever we have learnt up till now, a revision of sorts. पिछले एपिसोड में हमने रानी दिद्दा की पुनरावृत्ति की थी. अब आगे कश्मीर में अपने कालखंड की हर विधाओं में इतना काम हुआ है कि अपने हर खोज से हर विद्वान ने न सिर्फ कश्मीर को ही समृद्ध किया है वरन पूरे भारतवर्ष को योगदान दिया है. उनमें से एक नाम आता है महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त का. आज हम उसी आचार्य अभिनव गुप्त की पुनरावृत्ति इस एपिसोड के अंश में करेंगे. आचार्य अभिनव गुप्त एक ऐसे दार्शनिक, साहित्यकार, नाट्यशास्त्र के ज्ञाता, महादेव के परम भक्त, लेखक और आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने यह दिखाया कि परम चैतन्य तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ सन्यास से होकर ही नहीं वरन परिवार से होकर भी जाता है. शैव मत की यह एक ऐसी अनोखी धारणा है जो सबके लिए सुलभ है. उन्होंने इसी दर्शन को पूरे भारतवर्ष को दिया. अभिनव गुप्त को जानने का अर्थ होता है कश्मीर के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं कि हिंदू धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है और यह केवल इस्लाम या सूफी परंपरा के लिए जाना जाता है, यह धारणा जो भी अभिनव गुप्त को जानेंगे वह इस कश्मीरी आचार्य को पढ़कर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. अभिनव गुप्त दार्शनिक, रहस्यवादी, साहित्य शास्त्री, कश्मीरी शैव मत और तंत्र के प्रकांड पंडित थे. जो स्थान व्याकरण में पातंजलि और पाणिनि का है, वाचस्पति मिश्र का न्याय शास्त्र में है, वही गौरव अभिनव गुप्त का तंत्र, शैव मत, नाट्यशास्त्र और अलंकार विद्या में है. उन्होंने दर्शन शास्त्र को उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया और शैव मत में प्रतिभिज्ञा अर्थात सेल्फ रिकॉग्निशन और त्रिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया. वे कोरे तार्किक नहीं थे वरन साधना के डेप्थ को भी अच्छी तरह जानते थे कि केवल किताबी ज्ञान का ईश्वर प्राप्ति में कोई डायरेक्ट रिलेशन या सोर्स नहीं है. उन्होंने अपने हर लिखे हुए आध्यात्मिक विषय की साधना की थी. कश्मीर के इतिहास से आज इतना ही. अब बात 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की, मेरी पार्टी की.
Before discussing any further, I am throwing up some pointers. Would Pappu have got any media coverage but for his last name? Would Pappu have got any position in the party hierarchy even at the district or block level but for his birth lineage? Would Pappu have got employment in any private company anywhere in India minus his last name? And we all know that the answer to all these questions is a big no, zero, cipher. What does that mean? Does it give him the right to sit atop the party hierarchy and destroy it? And that is exactly what he is doing every day. The moment he opens his mouth, the party loses over 1 lakh supporters. Why did he have to talk about North and South divide? Did he needed to do that? Not necessarily. Here, I would praise the efforts of party men who have risen from the ranks. Ghulam Nabi Azad, Anand Sharma, Manish Tiwari, and all are cult figures in their own rights. And who speaks against them? Folks who have not even ever fought and won a block level election. I also at the same time praise the efforts of the Brahma Sena led by Raja Goswami, which has organized and fought for the people of an everyday basis. Their demand for a separate state of Bundelkhand, carved out of the states of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, has caught the imagination of the people. बुंदेलखंड में आने वाले उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के 21 जिले हैं। इसके मानचित्र को सुश्री मायावती ने, जब वो मुख्यमंत्री थी, विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार को पहले ही भेजा था, लेकिन बाद की सरकारों ने इस पर तवज्जो नहीं दिया और अब उसी मांग को ब्रह्म सेना फिर से पूरी मजबूती से उठा रही है। Those are the kinds of leaders whom congressmen should be looking forward to fulfill the aspirations of the masses rather than unknowingly follow the dumb Pappu and dumber Pinky. The dumb and the dumber. We are still awaiting for the dumbest. आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कश्मीर के आगे के इतिहास की, कांग्रेस पार्टी के कहानी की, बिहार में नीतीश सरकार के भविष्य की, क्या होगा देश की सबसे पुरानी पार्टी का, जानेंगे भारत अमेरिका के बनते बिगड़ते रिश्तों के बारे में। कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे सत्ता में बैठे कुछ लोगों से, आपके अपने प्रोग्राम वीकली टेक्स फ्रॉम न्यूयॉर्क में। हां, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।